Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for grade 8. We are learning unit 2 और हमारा आज का SLO है Variety of pronouns including reflexive pronouns. तो बेटा आज हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले ग्रेड 7 में आप ऑलरेडी आइडेंटिफाई एंड यूज पर्सनल प्रोनाउंस ही, शी, दे, हर, हिज, हिम, वे, देम एक्सेट्रा ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. यू आर फेमिलियर विद प्रोनाउंस. सो लेट्स लर्न अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से. अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेंशंस इन कुरान सूरह अल-बकरा आयत नंबर 11. एंड व्हेन इट वाज सेड टू देम not to make themselves evildoer in the word, they said that rather we are our own reformers. Yes, my dear students. बेटा इस आयत को हम इंटेंसिव प्रोनाउंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, और हमने ये देखा ये बात किन लोगों की हो रही है. जब उनसे कहा जाता है ना कि आप डोंट बी इवल डूअर्स, तो कहते हैं हम तो इवल डूअर्स नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं. और ये कौन लोग होते हैं? जिनके दिल में बुराई होती है बट दे प्रिटेंड टू बी गुड, और इनको कुरान की टर्म्स में मुनाफिक कहते हैं. तो बेटा ये हमारे लिए एक बहुत अलार्मिंग बात है कि हर वक्त हम अपने ईमान का जायज़ा लें, अपनी नीयत को खालिस रखें. जो भी बात करें जो हमारी ज़बान पर हो वो हमारे दिल में भी हो. इसको कहते हैं इखलास नीयत. तो जब कोई काम करने लगे, जब कोई भी सिचुएशन हो, प्योरीफाई योर निया फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि या अल्लाह हम ये काम खालिस्तन आपके लिए करें, आप इससे राज़ी हो जाएं और इसमें आप बरकत दे दें ताकि हमारे से कोई बुराई ना हो. क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, जो मुनाफिक होते हैं, दे डू दिस ऑन पर्पस. एक होता है मिस्टेक, आप अनइंटेंशनली करें, लेकिन ये इंटेंशनली कर रहे होते हैं. और जब उनसे कहा जाता है ना डोंट डू दिस, आप क्यों ये बुराई करें, वाई यू आर डूइंग दिस, तो कहते हैं हम तो अच्छाई के लिए कर रहे हैं, हम तो बहुत खैर ख्वाह हैं. तो दिस इज स्कैरी. ओके, वी नीड टू चेक आवरसेल्फ ऑल द टाइम. अब यहां देखें देमसेल्व्स जो है ये यहां पर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ. दे सेड टू देम नॉट मेक देमसेल्व्स. ओके, तो अब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में मजीद सीखते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी. योर टीचर विल प्रोवाइड have completed sentences and you have to complete them with the reflexive pronouns. आपने reflexive pronouns के साथ sentences को complete करना है. This is your activity. Pause the video, enjoy the activity and then come back. Yes beta, are you done with it? Okay, let's learn further. क्या होते हैं reflexive pronoun? When to use? We use reflexive pronoun when the subject and the object are same. सब्जेक्ट क्या होता है? द डूअर ऑफ द एक्शन. और ऑब्जेक्ट क्या होता है? द रिसीवर ऑफ द एक्शन. जब डूअर एंड रिसीवर आर सेम तो हम दोनों मर्तबा नाम या सेम टर्म यूज करने की बजाय एक मर्तबा नाउन यूज करते हैं और दूसरी मर्तबा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. बेटा प्रोनाउन की डेफिनेशन हर जगह सेम है, अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन. और अगर द डूअर, द नाउन एंड द ऑब्जेक्ट, द रिसीवर ऑफ द एक्शन बोथ आर सेम, तो पहले मर्तबा हम नाउन यूज करेंगे सब्जेक्ट के तौर पर और दूसरी मर्तबा उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे. सुसन कट हरसेल्फ. नाउ हु इज डूइंग द एक्शन? सुसन. हु कट? सुसन. शी हरसेल्फ. तो क्या है अब यहां अगर आप लिखे सुसन कट सुसन, कितना अजीब लगता है ना. दैट डज नॉट, और वो लैंग्वेज अप्रोप्रिएट भी नहीं है. इसलिए आपका सब्जेक्ट है सोसन एंड द ऑब्जेक्ट, द रिसीवर ऑफ द एक्शन इज ऑल्सो सोसन. सो वी हैव रिप्लेस्ड इट विद द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ. डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज हाउ, अगर आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, डूअर ऑफ द एक्शन, रिसीवर ऑफ द एक्शन इज सेम, तो आप ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से. A reflexive pronoun usually refers to the subject of the sentence, or the hunter had injured himself. अब देखें ये मेल है हमारा सब्जेक्ट, तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो गया? himself. And I had seen him do so myself. Now your subject for this part of sentence is I,
और I के लिए क्या है, myself. So while this is how, बेटा आपने इस तरह से I के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है myself, he के लिए himself, she के लिए herself, आपने appropriate रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करने हैं. While sharpening a knife, the butcher cut himself. अब butcher जो है वो एक मेल पर्सन है और उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, himself. Okay. The cat bit itself. Okay. अब cat हमें पता है एनिमल्स के लिए हम itself यूज करते हैं. Are you talking to yourself? ये सिंगुलर you है तो yourself, और अगर प्लूरल हो तो क्या होता है, yourselves. शाबाश. In this example, the reflexive pronoun yourself refers back to the pronoun you. Now let's see, आपकी बुक में reflexive pronoun. Do you remember? We use reflexive pronouns as a direct object when the object is the same as the subject of the verb. For example, she is instructing herself to cook. And we also use preposition by. For example, he lived by himself. Sometime इस तरह से भी हम इसको use करते हैं. So let's practice it through an activity. Use different reflexive pronouns. और वो क्या क्या हो सकते हैं उनकी possibilities? Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. ये बेटा total reflexive pronouns है. ठीक है. Myself for first person singular अगर आपका subject I है. Yourself for second person singular अगर आपका subject one second person है. Himself for third person singular male यानी अगर आपका subject he है. Herself for third person singular female अगर आपका subject she है. Itself for third person singular if it's an animal or an object. Ourself for first person plural अगर आपका subject we है. और yourself for second person plural अगर आपका subject you in plural form है. और themselves for third person plural, that is if your subject is they. ये बेसिक चीजें आपको पता है. अब इनको जहन में रखते हुए आपने sentences में reflexive pronouns यूज करने हैं. Pause the video, enjoy the activity and then come back. Yes, my dear children, are you done? Okay, good. It was easy for you. Now let's practice it from your book, page number 17. Question C. इस part को आपने बुक पर ही सॉल्व करना है. पॉज द वीडियो, कंप्लीट द टास्क एंड देन कम बैक. यस, आर यू डन? ओके, हियर इज अ वर्कशीट. वंस अगेन टीचर्स काइंडली इसका प्रिंट लें, फोटोकॉपी बच्चों को दें ताकि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की मजीद प्रैक्टिस कर सके. और हियर इज योर होमवर्क. यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इन योर सेंटेंसेस. ऑलराइट, so that's it for today. Thank you and Allah Hafiz.